watching South Asia Newsline, and the top stories we are tracking for you on Tuesday, the 5th of May. PM Modi condemns UAE attack, Indian nationals injured. US clears major F-16 radar support package for Pakistan. And Nepal reiterates Lipole claim calls for talks with India. And now for all the details. India's Prime Minister Narendra Modi on Tuesday denounced the attack on Fujairah in the UAE, describing it as unacceptable and expressing concern over the safety of civilians, including Indian nationals. In a post on social media platform X, the Prime Minister said targeting civilian infrastructure cannot be justified and reaffirmed India's solidarity with the UAE. The remarks comes a day after a drone strike triggered a fire at a key oil facility in Fujairah. The UAE has blamed Iran for the attack, which comes amid heightened tensions in the region. India's foreign ministry also issued a strong statement calling the attack unacceptable and urging an immediate halt to hostilities targeting civilians. The Indian embassy in the UAE has confirmed that the injured nationals are receiving medical care and that authorities in close coordination with the Emirati officials. New Delhi has emphasized the importance of maintaining peace and stability in West Asia, while also highlighting the need for secure and uninterrupted navigation through the Strait of Hormuz, a critical route for global energy supplies. The United States Air Force has awarded a $488 million contract to Northrop Grumman Systems Corporation for long-term engineering and technical support of F-16 radar systems. Pakistan is among several countries included in the deal under the U.S. Foreign Military Sales Program, alongside partners across Europe, the Middle East, and Asia. The contract is aimed at sustaining operational readiness and extending the service life of F-16 fleets operated by allied nations. The development follows an earlier U.S. proposal notified to Congress in late 2025, outlining a separate $686 million package to upgrade Pakistan's F-16 fleet. U.S. officials say the upgrades will help extend the operational life of Pakistan's F-16 aircraft into the next decade, while enhancing safety and mission capability. Moving on. As the world marked Press Freedom Day this week, voices from Pakistan-occupied regions have alleged growing censorship and repression. We have a report. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, claims of press freedom continue to face serious scrutiny. As the world observed Press Freedom Day this week, activists allege that censorship and suppression by Pakistan's military establishment remain widespread. Journalism in Pakistan and its occupied territories has long been accused of operating under pressure. Media outlets are said to function under tight oversight through the Press Information Department and the military's media wing ISPR. Exiled voices say the space for independent reporting is shrinking further. पाकिस्तान की रैंकिंग 153 है दुनिया के 180 ममालिक में, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ह्यूमन राइट्स वॉच, फ्रीडम हाउस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके बारे में कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। कल यूनाइटेड नेशन ने इस चीज का जिक्र किया मई 3 को कि पाकिस्तान बशमूल दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वहां पर जर्नलिस्ट जो हैं उनको डिटेन किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, जो कि बंद होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अदनान रावत हैं, उनको इस पर डिटेन किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है क्योंकि उन्होंने मार्च में जो एहतजाज हुआ था उसके ऊपर जो मजालिम है उसके ऊपर आवाज उठाई। शेर नादिर शाही है, उनको काफी अरसे तक जो है ना उनको कैद में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, फिर उनको रिलीज किया गया।
पाकिस्तान की जो फौज है उसका मुकम्मल कब्जा है जो वहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर, और पेमरा के नाम पर, दूसरे कवानीन के नाम पर लोगों के जो फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी है उसको कंट्रोल किया जाता है, उनके इश्तिहार बंद किए जाते हैं और उनको जबरदस्ती जो मीडिया की जो गाइडलाइंस हैं पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की फेवर में, उसको टो करने के लिए कहा जाता है, उनके ऊपर जो है प्रेशर डाला जाता है, नहीं तो उनको जो है जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। हमें इलाके पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम बात करें तो उसके ऊपर सेडिशन और टेररिज्म चार्जेस होते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने हमें इजाजत दी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की जो इलाका हिंदुस्तान है उसके बारे में बात करें अगर हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं। Despite official claims, journalists and activists in Pakistan and its occupied regions continue to report censorship, institutional control, and shrinking space for independent media, raising serious questions about democratic accountability. And Nepal has reiterated its firm stance on the long-standing border dispute with India and China over the Lipu Lake Pass, insisting the territory belongs to Nepal and must be resolved through diplomatic dialogue. Speaking in Kathmandu, government spokesperson and education minister Sasmit Pokhral said Nepal remains committed to resolving the issue through dialogue with India. The statement comes amid renewed tensions following India's decision to reopen the Kailash Mansarovar pilgrimage route via Lipu Lake Pass, scheduled to operate between June and August 2026. Nepal has formally objected to the move, sending diplomatic notes to both India and China and urging them not to carry out any activities in the disputed region. Kathmandu maintains that Lipu Lake, along with Kalapani and Limpiodara, falls within its territory based on the 1816 Treaty of Sugauli. It has also raised concerns over past activities in the area, including road construction and trade arrangements, calling them unilateral. India, however, on Sunday has rejected Nepal's claims, describing them as untenable and not based on historical evidence. New Delhi says the Lipu Lake route has been used for decades, including the Kailash Mansarovar pilgrimage, since the 1950s, and that recent disruptions were due to the COVID-19 pandemic. यसमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको थियो, त्यसमा भारत सरकारले पनि केही गरेको छ। भारत सरकारले पनि खुला सहकार्यबाट यसको कुनै एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भनेको छ। नेपाल सरकारको पनि जुन त्यहाँ सीमाना विवाद भएको छ त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ, त्यो हाम्रो प्रेस नोटबाट आइसकेको छ। बाँकी दुई सरकार बीच सहकार्य हुँदै कुरा गर्ने विषय हो। And Sri Lanka and the Maldives have strengthened bilateral ties with the signing of 7 agreements during Maldivian President Mohamed Muizzu's ongoing state visit to Colombo. Both sides also agreed to expand collaboration in areas such as education, archiving, teacher training, and youth and sports development. President Muizzu described the visit as a turning point in relations between the two Indian Ocean neighbors. The visit coincides with the 60th anniversary of diplomatic relations between the two countries, highlighting decades of cooperation and shared regional interests. As part of the commemorations, President Muizzu planted a sapling at Colombo's Viharamaha Devi Park, symbolizing the growing partnership. Muizzu is on a 4-day state visit at the invitation of President Dissanayake, accompanied by senior ministers and top officials. The agreements signal a broader push by both nations to strengthen regional cooperation and economic engagement in the Indian Ocean region. Moving on, transgender umpire in India's Tamil Nadu state, Ritika Siri, was seen officiating a friendly cricket match in Coimbatore city on Sunday. Having begun her career before transitioning, she now continues to train and gain experience, aspiring to contribute at the international level. If I'm lucky and if I get the adequate support, I would like to make it to the ICC, International Cricket Council panel, said Sri. However, her journey has not been easy, with many doubting her interests. She credits her mentors who motivated her not to quit.
அப்புறம் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக நான் முத்துராஜுங்க பேரில் தான் நான் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் 2021. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் எனக்கு லாஸ்ட்ல ஒன்றும் தெரியாது. நிறைய ப்ராப்ளம், நிறைய டிசிஷன்லாம் வந்து மேக் பண்ணல, தப்பு நடந்துச்சு. நிறைய பேர் திட்டினாங்க, எதுக்கு நீலாம் பேரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் உடனே சார்ட்ட சொன்னேன், சார் நான் வந்து அது குவாலிஃபைட் கிடையாது, நான் ஒரு ஆர்வத்தில் நான் வந்துட்டேன், ஸோ என்னால் இது பண்ண முடியாதுங்கும் போது அவர் தான் சொன்னார், 100 பேர் உன்னை திட்டாங்கன்னா 1000 பேர் உன்னை பெருமைப்படுத்துறதுக்கு நீ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாப் குவிக் பண்ணிக்கோ, எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மோட்டிவேட் பண்ணாரு. அடுத்து என்னுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிசிஐ வந்து குவாலிஃபைட் அம்பையர் ஆகணும், பிசிசிஐ பேனலில் நான் போகணும், அதுக்கப்புறம் ஐபிஎல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்னோட நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு திருநங்கையே எனக்கு இப்போ இருக்கிற எய்ம் அவ்வளோதான். ஸோ ஐபிஎல்ல போய் நிற்கணும் அப்படிங்கிறதான். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது இதே மாதிரி பெரியவங்களை சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஐசிசி பேனலில் இருக்கிறது சான்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பார்க்கலாம். That's all in tonight's edition. We will see you same time tomorrow.